We literally recreated the fastest cars on the planet in GTA. Everything from a 300-mile-per-hour car to this car in the world that is 3,000 miles per hour. That's a lot of miles. And we're going to be racing them all on complex tracks to take a bath in ketchup. You know I hate ketchup. 3, 2, 1, go! Let's go! Oh, cool. I get spun out in the beginning. Yes! I'm in the back because of Chandler. Just so you guys know, first place gets 4 points, second gets 3, third gets 1, last place gets 0. Whoever has the least, babes and ketchup. Ow! Oh, no. So I just won't get last. Perfect. Whoa.
Good evening. Good evening. We had just finished the introduction on fundamental rights yesterday, and as I said, that we'll be first looking into the two variants of due process of law and procedure established by law. Okay, so first we'll try to understand an important concept of due process of law. So what does it mean? What do you basically understand by the idea of due process of law? Or rather I should say the idea of procedure established by law. हमें इस इन दो आर्टिकल के बारे में बेसिकली बात करना था ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड procedure established by law. So if you see Article 21, which I discussed, what are the words which are used in Article 21? Life and personal liberty. So no person's life, right to life and personal liberty can be deprived except according to a procedure established by law. This is what is stated in Article 21. We had discussed this yesterday. So today we'll try to understand that what does the expression procedure established by law would mean and how this will be different from the next expression, that is due process of law. Okay? So what does this article say? That Article 21 gives you right to life plus it gives you personal liberty, but it also says that it can be restricted by a procedure established by law. So what would the expression that is procedure established by law would mean? And we have to basically try to see this concept, because see, when we use the concept of procedure established by law, it is basically, I'm just writing it here, procedure established by law. It is a principle which is based on the concept of parliamentary supremacy. Which country would use this principle of procedure established by law? Those countries which have parliamentary supremacy, which have the concept of parliamentary supremacy, which have a unwritten constitution. Those countries actually run by the principles of procedure established by law. So what does it show? It basically, this principle, it is based on the principle of parliamentary supremacy. So you are basically trying to see this concept, which is the concept of procedure established by law. But this procedure established by law as a concept, this concept is applicable on those countries which is run on the principle of parliamentary supremacy. A country like a Great Britain, a country which has a unwritten constitution, and that is a nation which is operative upon the concept of principles of the parliamentary supremacy. Okay. So we have a case established by law, and the law has been made by following all the correct process,
and the law has been made by following all the correct procedures, then the courts cannot help you. So such a case went very soon to the court, which was the A.K. Gopalan versus State of Madras. A.K. Gopalan versus State of Madras. That is 1950 case. And I had given you a brief on this case yesterday while I ended the class, that he is a political person. He has to speak in his rallies. He is a great orator, but he is arrested. So what is the arrest made under? So there is a law which is passed by the legislature that is called Preventive Detention. Preventive Detention Act 1950. तो पहले से एक कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और उस एक्ट के तहत 1950 में ये एक्ट बना है, और A.K. गोपालन साहब को उसी एक्ट के तहत सजा यानी उनको अरेस्ट कर लिया गया है. सो नाउ A.K. गोपालन गोज टू द कोर्ट and he raises some very pertinent question. What is the question that he raises? He says that, you know, what has happened to me? He basically raises an issue and he says that, so गोपालन साहब की प्ली क्या है, ये ना भी लिखे तो आप बस समझ ले इसको. A.K. गोपालन क्या कह रहे हैं कोर्ट से? A.K. गोपालन कोर्ट से कह रहे हैं कि, you know, I have been detained without breaking any law. तो अगर मेरा अरेस्ट होगा, डिटेंशन होगा, तो इट शुड बी I should have broken a law, but I have not done that. But I am still detained. I am still arrested. So detention and arrest में थोड़ा अंतर होता है. Detention is more like preventive. So you are basically detained so that you are prevented from committing a crime, because it is believed that if you are not detained, then in doing your activities you might break a law. Okay, so detention is not like you are put behind bars in the jail. Detention is mostly in some you could say government premise or government building or a facility, or sometime within your own house you could be detained, so that, you know, the state will ensure that you do not cross a particular, you know, space, and you would be confined to a particular space only. That's largely detention is. So he is detained under which law? Preventive Detention Act 1950. And he is basically challenging his detention by, and in this challenge of the petition, this is the verdict that comes from the Supreme Court of India. That's the first issue. The second issue is that he says that, you know, it violates freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. What violates? The detention violates, because I have been detained and my detention violates the freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. So I am basically detained, and this is a violation of my freedom of speech and expression under fundamental rights, because I have to speak in so many rallies. Now I cannot express my opinion in the rallies. So as a political person, what they are doing is they are violating my personal liberty. तो मेरा क्या हो रहा है? उल्लंघन किस चीज का हो रहा है? मेरे पर्सनल लिबर्टी का भी उल्लंघन वो कर रहे हैं. दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो गोपालन साहब ये कहते हैं कि हमारे लिए अब आप ही एक रास्ता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, वो कहते हैं कि प्रेयर करते हैं कि डिक्लेयर द डिटेंशन एज इलीगल. व्हाई इलीगल? एज इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट. ठीक. या फिर अगर ये लॉ है जिसने इसकी इजाजत दी है, तो डिक्लेयर दिस लॉ एज इलीगल, है ना. बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, द A.K. Gopalan case has put this question before the Supreme Court of India, that, you know, how can I be detained
without breaking any law, and if such is the case, then declare this law as invalid because it violates my fundamental right under freedom of speech and expression. Article 13 clause 2, if you remember, any law which violates fundamental right, to the extent of the violation, that law can be declared null and void. So if this is a law which is violating my freedom of speech and expression, to the extent of its violation, this can be declared null and void as well. And so he makes this prayer that I want my detention to be declared illegal or not. If not, then the law itself should be declared illegal. वो कोर्ट के पास इस प्ली को लेकर के पहुंचते हैं और इस बार कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट एक्चुअली गिव्स अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. कोर्ट एक्चुअली एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन में इस केस को हल करता है. कोर्ट उनसे कहता है कि इफ यू रीड आर्टिकल 21, then Article 21 specifically says that your personal liberty can be restricted by a law. So there is a law in place. There is a law. So if your personal liberty is violated by a law, then we can't help you because 21 itself says that your personal liberty can be restricted by a law. So there is already a law which is made by the parliament. So we can't help you. That's the first thing that the Supreme Court says. Then it says that your personal liberty does not have any safeguard under Article 21 of the Constitution. Okay. So if a competent lawmaking body makes a law and takes away your personal liberty, we can't say that law as invalid. Why? Because the bench, the Supreme Court, was interpreting these law in terms of English Constitution, where they understood that because the expression used in Article 21 is procedure established by law, so if there is a competent law made by the legislature violating or restricting your personal liberty, then court said that we have no authority to intervene over there. What we can do is we can only look at the law, whether the law through which the process has been made, we can only look at the process and not the law. If the process is correct, we have no authority to intervene in this particular case. ठीक है, इसलिए कोर्ट ने एक तरह से जो पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझा. They did not move into the other context. Now 50s is too early times for India. 50 is the time when India has just become a republic. You could say that the judiciary is not entirely in a confrontational attitude with the legislature. So if the legislature has made a law, the judiciary was interpreting the constitution very conservatively, very narrowly. They did not want any kind of issues with the legislature, because this is very early times and there is immense faith in the judiciary over the legislature as well. And this is the time when we have a restrained kind of judiciary. तो कोई टसल नहीं कहता जुडिशरी. जो संविधान में लिखा है उन्होंने उसको as it is interpret कर दिया without looking into the issues from any different perspective. कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लिबर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम लिबर्टी. उन्होंने कहा लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी इज नॉट द सेम, है ना. सो लिबर्टी मींस यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट 21 में लिबर्टी वर्ड इज नॉट यूज्ड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोर्ट का. इन आर्टिकल 21 यू आर यूजिंग लिबर्टी, सो इट इज नॉट द सेम. पर्सनल लिबर्टी वुड सिंपली मीन that you are talking about the freedom or liberty of the bodily parts. Personal liberty. तो हमारे जो शरीर के अंग हैं हम उनके स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं. We are not talking about liberty in the context of what you see under Article 19 at different varieties of freedom. Second issue कोर्ट कि मेरा freedom of speech and expression भी तो वायलेट हो रहा है. यानी आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, ये फ्रीडम केवल फ्री पर्संस को अवेलेबल है. आप डिटेन हो गए तो नाउ दिस फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू यू. तो अब ऐसी स्थिति बन गई कि कोर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी क्लियर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
because they want that you should not have a right to life and personal liberty which cannot be restricted by state legislation. So a competent legislature, if there is a law restricting your personal liberty, then your personal liberty can be restricted, and the court cannot entertain such a plea by declaring the law passed by the competent legislature as invalid, because nowhere does the constitution say that if there is a law which is depriving you of your personal liberty, then we have to interpret the law on the principles of natural justice. We just need to interpret the law on the principles of procedure established by law. इसलिए जब इस विषय को लेकर के चर्चा हुई इस केस में, तो कोर्ट ने किसी भी तरह से हमारे ए.के. गोपालन साहब के पक्ष में निर्णय नहीं दिया, और कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम पार्लियामेंट के लॉ के बियॉन्ड जाकर कोई भी प्रिंसिपल को इन्वोक नहीं कर सकते। यानी ए.के. गोपालन साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इस लॉ को इलीगल घोषित कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोर्ट ने कहा दैट इज नॉट आवर कॉम्पिटेंसी, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से दैट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ मी टू डू दैट। सो आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी कैन बी restricted by a law, and there is a law which has restricted your personal liberty, therefore your detention is legal. We can't declare it illegal by invoking any other principle like principle of natural justice. So this was a very narrow conservative understanding of personal liberty by the Supreme Court of India in the immediate case. ठीक है, लिख लीजिए इसको। The Supreme Court delivered a very narrow interpretation. The Supreme Court delivered a very narrow interpretation to the provision of personal liberty, underline that word, personal liberty, and procedure established by law, underline this word as well, procedure established by law. Next point, the court understood that under Article 21, there is no safeguard to personal liberty. There is no safeguard to personal liberty if personal liberty is taken away, by a competent legislation. Full stop. Next point. The court understood the English view of personal liberty. The English view of personal liberty, where the legislature was superior to the judiciary. Next point, the court also clarified that personal liberty means protection to
bodily parts, protection to bodily parts of an individual, bodily, B-O-D-I-L-Y, bodily parts of the individual, including bodily organs, B-O-D-I-L-Y, bodily organs. Next point, bodily organs. Next point, further, rights under article U by A, rights under article 19 clause 1 subclause A was available only to free man, only to a free man, and not of the one who is detained. Who is detained. तो किसको मिलेगा ये राइट? फ्री मैन को. कोई डिटेन्ड है तो उसको 19(1) उस पे इफेक्टिव होगा ही नहीं. नेक्स्ट, द कोर्ट ऑल्सो रिफ्यूज्ड, यानी इसमें कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोर्ट ने क्या कहा कि योर पर्सनल लिबर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अ लॉ because the constitution mentions the word procedure established by law. Just to explain you, I am giving you some more observations made by the court in this particular judgment, just for your interpretation sakes. But when you write or when you quote these judgment, you just have to write the crux of it, which means in this case, the court refused to acknowledge that there is a safeguard to violation of personal liberty through a competent legislation. So, A.K. Gopalan was not given any kind of relief in this particular case. The court refused to read due process of law, refused to read, यानी कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इसमें शामिल नहीं किया. The court refused to read due process of law under Article 21 by stating that the constitution makers had explicitly provided for procedure established by law, had explicitly provided for procedure established by law. Therefore, the court did not put the legislative action of depriving personal liberty to a person to the test of natural justice. Okay, so this is what you need to remember. This is a case for procedure established by law, where the Indian Supreme Court said that under Article 21, if there is a valid law passed by the competent legislative body depriving somebody of their personal liberty, then we will not invoke any other principle like the principle of due process of law or the principle of natural justice to give relief to the person concerned. In the immediate case, there is a politician called A.K. Gopalan. He is detained under the anti-detention law, which means this person now is detained under the Act, which is Preventive Detention Act 1950.
where did Supreme Court realize the concept of due process of law? कितना वक्त लगा हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक पहुंचने में? सो लेट अस नो दिस आल्सो एज अ फैक्ट. फिर मैं एक कंपैरिजन करूंगा दोनों के कॉन्सेप्ट में. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कॉन्सेप्ट है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कॉन्सेप्ट है. सो इस जजमेंट से भी आप समझ सकते हैं जो मैं अभी कहना चाह रहा हूं. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आपको क्या समझ में आया कि देयर इज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी. इफ लेजिस्लेटिव and that restricts a person's personal liberty. So even under Article 21, it simply says that it can be done by procedure established by law. So therefore, कोर्ट ने यही कहा कि आप चाहते हैं कि मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इसको इंटरप्रेट करूं, बट कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं कहता, इसलिए हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते और आपको किसी तरह का राहत नहीं मिल सकता. आपका डिटेंशन लीगल है, वैलिड है. लेकिन there's another case which is Menka Gandhi versus Union of India case 1978. Very important case. And when you look at this case, the Menka Gandhi case, Menka Gandhi versus Union of India case 1978, you will realize that in this case the Supreme Court had interpreted the idea of violation of personal liberty by invoking the principle of due process of law. इस बार कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवरटर्न किया जो उन्होंने 50s में लिया. दैट इज आफ्टर 28 लॉन्ग ईयर्स द कोर्ट ओवरटर्न्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट and this time they came up with a new judgment where they said that now if a law is taking away anyone's personal liberty, then what I have to do? The court said that we are not going to merely judge this law on the basis of procedure established by law. मतलब ये तो हम देखेंगे ही कि क्या ये प्रोसीजर को वायलेट तो नहीं कर रहा, यानी is the law which is made by the competent law making body, which means is it the power of the body to make such a law? तो पहला अगर हाँ तो ठीक है, ये लॉ फिट है. क्या सही प्रोसेस से ये लॉ पास किया गया है? इफ यस, लॉ इज फाइन. बट ये तो केवल प्रोसीजर में था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. बट दे नाउ से इन मेनका गांधी द कोर्ट सेड दैट वी विल आल्सो सी whether the law is fair and reasonable or not. And if we find that the law itself is unreasonable, it is unfair, it is unjust, then we are going to declare the law as invalid. So in the immediate case, that is Menka Gandhi's case, there was a law which was not allowing Menka Gandhi to travel abroad. So it is basically a passport issue. So Menka Gandhi's passports were seized by the government through a order, and this order has come because of a law which exists in the Passport Act. And so now the court actually looked into it and the court said that fine, if that is the case, then we are declaring this law as invalid because nobody can actually restrict the freedom of traveling abroad because this is part of the right to life. So court said that Article 21 is not only a safeguard against executive action, but it is also a safeguard against any kind of arbitrary action by the legislature. अब आप ध्यान से समझो, जब हम कह रहे हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो वहां पर एग्जीक्यूटिव के एक्शन से हमको परहेज मिल सकता है. यानी एग्जीक्यूटिव ने अगर हमको इलीगली डिटेन कर लिया, कोई लॉ नहीं है, एग्जीक्यूटिव ने डिटेन कर लिया, तो फिर कोर्ट आपको छुड़ा सकता है. कोर्ट कहेगा दिस इज इलीगल. तो अगर आर्बिट्ररी एक्शन एग्जीक्यूटिव का है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज फाइन, इट कैन सेव यू फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. बट इफ देयर इज आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, देन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन नॉट सेफगार्ड यू. ये मैंने कहा अभी. तो अगर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को देखें तो इसमें जो कोर्ट्स हैं, इट सेव्स वन फ्रॉम arbitrary action of executive. ठीक है, लेकिन बट
it cannot save one from action of लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर ने अगर लॉ बना दिया है तो फिर वो लॉ अच्छा है बुरा है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ये कोर्ट ने कब कहा था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कहा। तो मेनका गांधी के केस में अब कोर्ट ये कह रहा है कि हम केवल आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव से आपको नहीं बचाएंगे, वी विल ऑल्सो सेव यू फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। दैट इज व्हाई वी से दैट व्हेन such a judgment comes from the court of law, then it is giving priority to individual rights and restricts the state's power to act against the rights of the individual. That is why any kind of a law which restricts your personal liberty, and if that restriction, that law itself looks unfair, unjust, so it's an arbitrary action of the legislature. So under what we can say due process of law, what is the court trying to tell us? It says that it saves one from arbitrary action of the executive plus legislature, है ना? So अब वो कह रहे हैं कि law should not only be passed by correct process, we will also check that is the law fair, just or reasonable or not, and if that is not the case, we can struck down such a law. Okay, so that is what the courts basically gave us in terms of our understanding in the Maneka Gandhi case with regards to due process of law. लिखिए, in this case ये मार्जिन्स पे लिखना था, मतलब ये समझाने के लिए था, जजमेंट में यहां लिखेंगे। In this case the Supreme Court overturned the interpretations of A.K. Gopalan judgment and introduced judicial review which would ensure that the procedure must be just, fair, and reasonable. Procedure नहीं, the law must be, है ना? प्रोसीजर के बदले लिखो लॉ, प्रोसीजर को काट दो। हाँ, लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, which is closer to the concept of, to the American concept of, which is closer to the American concept of due process of law, which is closer to the American concept of due process of law. Next point, therefore Article 21 is a safeguard not only against arbitrary, देखो ये arbitrary executive action, but also
arbitrary executive action, but also the arbitrary action of the legislature. अब एक दूसरी बात थी कि क्या पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 19 में जो लिबर्टी मेंशन्ड है वो एक है या अलग है, तो कोर्ट ने इसको भी स्पष्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 and 21 do not exist as watertight compartment. What is understood as personal liberty would cover the ideas of liberty mentioned in article 19 of the constitution as well. उन्होंने कहा there is nothing like bodily organs liberty or personal liberty. Personal liberty and liberty are same. ये समझना है आपको. Which means personal liberty is equal to the concept of freedom mentioned in article 19. So they do not exist as watertight compartments. So it is different from article 21 mention of the word liberty. They are actually the same. Next point. The court said that article 19 and 21 are not watertight compartments, WATER water dash TIGST tight, watertight compartments, comma, so personal liberty would cover the rights mentioned under article 19 of the constitution. Mentioned under article 19 of the constitution. ठीक है? The court also said, next point, the court also said right to life is not merely confined to physical existence, but it also includes the right to live with dignity. The right to live with dignity. Next point. So, the procedure established by law under Article 21, the procedure established by law under Article 21 must be just, fair and reasonable. Okay, so that's what is explained in this particular idea. Okay, now we have to look at the two concepts in terms of what the doctrine of in the Menka Gandhi case. Okay, so now we'll try to understand these two concepts, which is about first procedure established by law. So it is based on, as I said, the English Constitution. The concept of procedure established by law is derived from the practice which prevails in Great Britain because it derived from the English Constitution. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है हमारी, दिस जुडिशरी हैज वेरी वेरी लिमिटेड पावर्स. इनके पास सीमित शक्तियां होती है ना. इसीलिए
ये क्या कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के तो आर्बिट्ररी एक्शन को नल एंड वॉइड कह सकते हैं, बट अगर लेजिस्लेचर आर्बिट्ररीली एक्ट कर रहा है बट फॉलोइंग करेक्ट प्रोसेस, तो उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। तो लेजिस्लेचर की यहां पर सुप्रीमेसी होती है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि जुडिशरी एक्ट्स अंडर सम लिमिटेड पावर्स एंड अथॉरिटी। एंड वेयर डज दिस आइडिया कम्स फ्रॉम? इट originated from England। तो ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट करता है। दिस आइडिया, दिस प्रैक्टिस, दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड। सो व्हाट इज इट? द जुडिशरी विल टेस्ट। मान लो इंग्लैंड में कोई लॉ बनता है, तो उसको कैसे टेस्ट करेगा? अगर हम ये समझ गए तो हमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझ में आ सकता है। तो आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। तो एक लॉ पास हुआ लेजिस्लेचर से एंड इट हैज कम टू द जुडिशरी फॉर रिव्यू। सो व्हाट आर द टेस्ट दैट द जुडिशरी विल अप्लाई ऑन द लॉ सो दैट इट कैन फाइंड द लॉ एज लीगल और इलीगल, है ना? सो व्हेनेवर अ जुडिशरी इज रिव्यूइंग अ लॉ, देन अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जुडिशरी विल अप्लाई दीज 3 टेस्ट, है ना? तो जुडिशरी applies 3 tests while reviewing a law passed by the legislature। ठीक है, so legislature has passed a law, and what are the basic 3 tests our judiciary is going to apply when a law is passed by the legislature? So this is what we have to understand in procedure established by law। ठीक, अब फर्स्ट टेस्ट, पहला टेस्ट है कि फर्स्ट टेस्ट जुडिशरी क्या देखता है कि एक लॉ बनाया है which is restricting your personal liberty, है ना, passed by a legislature, और यहां हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आप समझें restricting personal liberty, क्योंकि इसी केस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे कि क्यों ए.के. गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि डिटेंशन लॉ इज लीगल। तो पहला टेस्ट अप्लाई होगा बाय द जुडिशरी। फर्स्ट टेस्ट वो ये देखेंगे कि इज देयर अ लॉ विच एग्जिस्ट और विच ऑथराइजेस द एग्जीक्यूटिव टू रेस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अरेस्ट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा, है ना, पुलिस करेगी ना। तो सबसे पहले सबसे पहले जुडिशरी क्या देखेगा? वेदर the existence of a law which the executive to restrict individuals personal liberty. That's the first test. So what you are going to see is that कोई लॉ ऐसा है जो अथॉरिटी देता है एग्जीक्यूटिव को, एंड बाय दैट लॉ विच एम्पावर्स द एग्जीक्यूटिव टू रेस्ट्रिक्ट समबडीज इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, सो लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट करने की लॉ है या नहीं है। तो पहला टेस्ट हो गया। अब गोपालन केस याद करो, देयर इज ऑलरेडी अ लॉ विच इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो पास हो गया। पहला टेस्ट में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ये देखेगा कि यस देयर इज अ लॉ एंड अंडर दिस लॉ द एग्जीक्यूटिव इज एम्पावर्ड टू restrict somebody's personal liberty based on certain considerations and ground, because it is preventive. So even if they have not violated any law, but if the state thinks that he could violate a law, so to prevent the person from violating a law, the person could be detained by the executive. So executive derives their authority from a law, and now this is the first thing. So there is existence of a law. Now the second
thing that they are going to test is, we say it second test. Second test है कि whether the legislature is competent to make such a law. तो जो हमारा लेजिस्लेचर है, क्या उसके पास ये कॉम्पिटेंसी है? कॉम्पिटेंसी मतलब अथॉरिटी है, यानी अगर मान लो केंद्र सरकार, केंद्रीय पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, तो ये पूछना चाह रहा है ये लॉ टेस्ट दैट इज इट मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट. ऐसा तो नहीं कि स्टेट सब्जेक्ट है और उस पर ये लॉ बना रहा है तो फिर इलीगल हो जाएगा ये लॉ. सो यू शुड हैव द कॉम्पिटेंसी टू मेक सच अ लॉ. सो इफ सच अ लॉ इज मेड वेयर द लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट, तो दिस हैज पास द सेकेंड टेस्ट. तो ये लॉ किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने बनाया था. एंड पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक सच अ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो ये लॉ भी ए.के. गोपालन के केस में ये भी पास हो गया. तीसरा टेस्ट के थर्ड टेस्ट, क्योंकि प्रोसीजर है ना, तो तीसरा टेस्ट में प्रोसीजर चेक करते हैं. वेदर द कॉम्पिटेंट legislature, whether the competent legislature has passed the law by following the correct प्रोसीजर. तो ये जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है उसने जो सेट प्रोसीजर है, करेक्ट प्रोसीजर है, उसके आधार पर इस कानून को पास कराया है या नहीं कराया है. अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रिंसिपल पर जितने देश काम करते हैं वहां पर न्यायालय के पास इससे ज्यादा शक्ति किसी भी जुडिशियल रिव्यू में किसी लॉ के वैलिडिटी को लेकर नहीं होती. तो इसलिए ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ए.के. गोपालन साहब के कॉन्टेक्स्ट में हम आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट कर रहे हैं. आर्टिकल 21 वेरी क्लियरली मेंशंस द वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. देयरफॉर यू आर डिमांडिंग दैट वी इन्वोक द ग्राउंड्स ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वी इन्वोक द ग्राउंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट एज पर द रीडिंग ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज नॉट पॉसिबल, because 21 very clearly states that we have to interpret the law as per procedure established by law, which means this is the three principle on which the judiciary can examine a law passed by the legislature. तो यहां पर देखो कहीं भी मैंने ये लिखा है कि judiciary will check whether on the principles of natural justice is it fair, just or reasonable or not, whether it violates the principles of natural justice or not. अगर judiciary ये करने लगे तो that is possible only in ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिकॉज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इसके अलावा जुडिशरी क्या चेक करेगा? फोर्थ प्रिंसिपल, फोर्थ टेस्ट वहां लगाएगा कि वेदर द सेट प्रोसीजर विच हैज प्रोड्यूस द लॉ इज इट जस्ट, फेयर, रीजनेबल और नॉट, और इज इट नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो दिस इज लाइक एडिशनल सिक्योरिटी यू गेट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल बेस्ड कंट्रीज. दैट इज व्हाई वी से जुडिशरी हैज मोर पावर. यहां मैंने शुरू में शब्द क्या लिखा? जुडिशरी हैज लिमिटेड पावर, विच मींस दिस इज द लिमिटेशन ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी इन तीन टेस्ट से आगे नहीं बढ़ सकता. इट कैन नॉट एक्चुअली एक्सीड फ्रॉम दीज थ्री सेट कंडीशन, है ना. तो इसीलिए इफ द अबव थ्री टेस्ट्स आर met, then judiciary cannot declare a law as unjust if it contravenes personal liberty of the individual. इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते इस कंडीशंस में. सो इफ इट कॉन्ट्रावीन्स, इवन इफ कॉन्ट्रावीन्स लाइक deprivation of life or liberty,
मैं पर्सनल लिबर्टी लिख रहा हूं, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, then also judiciary cannot go to any other length. It has to consider that this law is valid. Why? Because it cannot move beyond these 3 tests. तो ये 3 जो टेस्ट होंगे, यही वो कंडीशन है जो हमें बताएगा कि ये लॉ वैलिड है या इनवैलिड है. अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो फिर जुडिशरी इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता है. यानी जुडिशरी क्या नहीं कर सकता है? It cannot examine whether the law is just, fair, and reasonable. So it cannot examine that whether the law in question is just, fair or reasonable or not. और यही बात किसमें जुड़ जाएगी? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कैनॉट के बदला हम यहां लिख लेंगे इट विल एग्जामिन वेदर द लॉ इज जस्ट, फेयर और रीजनेबल और नॉट. ठीक है. तो अगर मान लो हमें पता है कि जो लॉ है वो आर्बिट्ररी है ना, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर लॉ, because the law looks very, very arbitrary, because it gives so much of authority to the state to actually quell somebody's liberty, restrict somebody's liberty, restrict people's right to life. But still, judiciary cannot intervene. Judiciary cannot do anything because judiciary has limited authority. It can check the validity of a law based on these 3 prominent tests. तो ये 3 टेस्ट के अलावा किसी चौथे टेस्ट की तरफ जुडिशरी नहीं जा सकता. So whether the law is valid, invalid, it will be said by the court, but only on the basis of these 3 tests. अगर इन तीनों टेस्ट को पास करता है लॉ, तो जुडिशरी अब इससे आगे बढ़ के ये नहीं कहेगा कि लॉ इज आर्बिट्ररी, सो इट इज वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और इट इज वायलेटिव ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस, like it is violative of fairness principles, it is violative of the justness principles. It cannot say that. It cannot verify the law on the basis of these ideas, whether the law is good or bad. That's not the work of the judiciary. Judiciary has very limited authority, and therefore I think this is a proposition where you could say that judiciary has limited power. तो फिर इन देशों में कैसे पार्लियामेंट की अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट होगी? क्योंकि यहां तो पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, अनलिमिटेड अथॉरिटी है. तो फिर इन देशों में कैसे काम चलेगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स, लोगों के फ्रीडम, लोगों की लिबर्टी सिक्योर हो सके? तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटेन, एंड यू शुड रियलाइज दैट इन ब्रिटेन one of the best way, which is the check on the arbitrary powers of the legislature, is the public opinion of that prevails in Britain, because these are very old countries with very old model of democracy. तो यहां पर हम भारत से तुलना नहीं कर सकते. भारत में हम अगर ये करें तो यहां पर क्या होगा? देयर कैन बी वायलेशन. यहां पर तो कानून ही इतना जबरदस्त बनेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे. तो जुडिशरी को इसलिए यहां पर थोड़ी मजबूत और थोड़ा अधिक शक्तिशाली होना पड़ता है. Judiciary has to have some more powers so that it can actually check whether the law is fair, just, reasonable or not. जैसे मेनका गांधी को जुडिशरी ने बचाया. अगर हम प्रोसीजर established by law के आधार पर चल रहे होते तो even मेनका गांधी's rights would have been easily violated. And why were they doing it? Basically because they were actually using the law to settle personal scores. Because Menka Gandhi was basically a part of a family, and in that family there were people who were ruling the country at the time, and so they did not like the idea that Menka Gandhi would go to any other country or foreign country, and therefore they had some own ideas within them, and so they restricted her movement. But Supreme Court came to the rescue. But why? Which means at that time the manner in which the Supreme Court applied the law, tested the validity of the law, so we say that the Supreme Court came closer to the idea of due process of law, because under this the courts actually did not have that authority. So if somebody asks you, then what will happen to the idea of balance of power in those countries? So you will say that these countries relies very heavily on the good conduct of the parliamentarians. And why would parliamentarians be of good conduct? Because in these countries the level of political awareness of the masses, the civil society, is very high. Because see, in Britain, if you see their history,
people have great faith in their parliament. Why? Because parliament has always fought for people's right against monarchy. है तो चाहे जो भी रिवॉल्यूशन हो इंग्लैंड में, तो वहां पर हमेशा इस बात के लिए रिवॉल्यूशन हुआ है कि पावर्स किसके पास ज्यादा हो, मोनार्की के पास या पार्लियामेंट के पास. क्यों? और पीपल हैव ऑलवेज सपोर्टेड द पार्लियामेंट बिकॉज दे हैड ट्रस्ट इन द पार्लियामेंट. द हिस्ट्री टेल्स देम दैट their parliament has always stood for people's well-being, people's right. That's why in that country you don't require any other idea. While some countries may require due process, Britain does not require it because Britain had a thriving civil society and parliaments looks into the opinion of the people and they don't do something which will go against public opinion. Therefore, what protects any arbitrary lawmaking power of the legislature in those countries? Not the judiciary, but good conduct of the parliamentarians and a thriving public opinion. जो हमारे जैसे देश में जो भी नया है, बहुत यंग डेमोक्रेसी है, हम इतना उम्मीद नहीं कर सकते. हमारे यहां भी पॉलिटिकल अवेयरनेस का लेवल भी बहुत कम है ना. हमारे यहां लोग बहुत गरीब हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपके वोट की वैल्यू क्या होती है. दैट इज व्हाई यू वुड सी दैट पीपल वुड एंगेज इनटू सो मेनी प्रैक्टिसेस, है ना. जैसे आपने किसी को कुछ अच्छा कुछ ऑफर कर दिया और उनको कहा कि आप हमें ही वोट करना, तो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, आपने हमारा दिल खुश कर दिया तो हम आपको जरूर वोट करेंगे. यू कॉन्स्टेंटली सी दैट इन वोट एंड व्हेन देयर इज वोटिंग टाइम, करेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. देयर आर सम वीडियोस वेयर ओपन करेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. वो कहते हैं कि एकदम बैठे हुए हैं लेकर के करेंसी और एकदम दे रहे हैं, आ रहे हैं लोग. सो इट मीन्स दिस इज हाउ पीपल आर एक्चुअली understanding the value of vote. So it's not actually may not be very efficient in our society where people's political, you could say, level of understanding or people's political education is still at a very lower level, where people are not very educated. Plus, the society is very, very economically uneven. Now look at those societies, Western societies. There is a satisfactory level of economic development. वहां भी लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे वाले गरीब के डेफिनेशन वाले नहीं है. हमारे यहां लोग अप्रत्याशित रूप से गरीब हैं. मतलब गरीबी में जो गोल्ड मेडल होता है उस टाइप के गरीब हैं, है ना. और मतलब अगर आपको एक नमूना देखना हो, आइडियल टाइप ऑफ गरीबी, तो कहां आते हैं आप? भारत और अलग अलग और भी कुछ देश हैं, अफ्रीका भी जा सकते हैं. आपको एकदम आइडियल टाइप, मतलब इससे ज्यादा आपको आइडियल गरीबी नहीं मिल सकता. इसे देखते हैं ना, अंग्रेज बहुत सारे आते हैं यहां पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो क्या दिखाते हैं उसमें? वो भारत की पॉवर्टी को दिखाते हैं. बिकॉज पॉवर्टी इज समथिंग दैट इज सेलेबल. यानी भारत को बता दें कि देखो पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है, अभी भी इनकी बड़ी हालत खराब है, सब गरीब तबे कुचले लोग हैं और इनको जबरदस्ती का लगता है कि हम सुपर पावर बन गए हैं या हम सुपर पावर बनने वाले हैं. क्यों? क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता. इंडिया के दो साइड्स हैं, एक इंडिया जो डेफिनेटली अभी बहुत गरीब है, उसको बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको आमतौर पर हम कहते हैं वो भारत है ना, हिंदी वाला. और जो इंडिया है, जो अंग्रेजी वाला है, वो थोड़ा सा अपवर्डली मोबाइल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा ग्लोबल सिटीजन टाइप का है, थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन उसका एटीट्यूड है ना. वो थोड़ा समृद्ध भी है ना. और वो कहाँ रहता है? वो शहरों में रहता है. तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है भारत का. तो ऐसे समझिए कि जिस सोसाइटी में अभी लेवल ऑफ पॉवर्टी इज वेरी वेरी एक्यूट, which means you have not had a satisfactory level of economic development. तो डेमोक्रेसी के लिए भी हम कहते हैं कि उन सोसाइटीज में डेमोक्रेसी बहुत सूटेबल नहीं हो सकती है. इंडिया इज एन एक्सेप्शन. हमारे यहाँ तमाम समस्या इसके बावजूद हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत सूटेबल है ना. जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई तो विश्व के सभी पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत चलेगी तो 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, ये 20-25 टुकड़ों में देश पट जाएगा. कुछ भी नहीं है इनके पास, समझ है नहीं, जबरदस्ती के पॉलिटिकल लीडर्स बने हुए हैं यहाँ पर, इतनी भाषा है. क्यों? क्योंकि वो हमें देखते थे फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. तो अंग्रेजों को लगता था कि इंडिया मतलब एटलीस्ट 28-30 स्टेट्स तो यहाँ बनी जाएगा. तो वो भारत को कहते थे कि इट्स अ मल्टीनेशनल सोसाइटी, है ना. जबरदस्ती का इन्होंने एक अपने आप को माना हुआ है, बट दैट इज देयर परसेप्शन. वो वेस्टर्न व्यू है. क्यों? क्योंकि वो अपने से समझते थे हमको. क्योंकि उनके यहाँ अगर दो भाषा बोलने वाले लोग हैं तो वो दो अलग राष्ट्र हैं. धर्म से सब एक है, लेकिन अगर कोई फ्रेंच बोलता है तो उसका फ्रांस देश होगा, है ना. कोई जर्मन बोलता है तो उसका जर्मनी देश होगा. कोई इटालियन बोलता है तो उसका देश इटली होगा. उनके रेस भी लगभग एक जैसे हैं, एंग्लो सैक्सन रेस है, बट इसके बावजूद दे आर ऑल डिफरेंट कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज दे थॉट दैट लिंग्विस्टिक डिफरेंस वाज अ ह्यूज डिफरेंस. अब वो हमारे देश में आए, उसने वो हमारे यहाँ
5-10 किलोमीटर बढ़ते थे भाषा बदल जाती थी, तो बड़े कंफ्यूज रहते थे कि ये अजीब सा देश है, जहां जाओ वहीं अलग भाषा है, प्लस वेशभूषा अलग है। नॉर्थ इंडिया गए तो लोग अलग टाइप से पहनते हैं, उड़ते हैं, बात करते हैं, साउथ गए तो एकदम डिफरेंट, है ना। तो उन्होंने कहा कि कल्चरली डिफरेंट है, क्योंकि उनके लिए यही था, बट देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स विच इज कॉमन अमंग ऑल ऑफ अस, बट वो नहीं समझ पाए, बिकॉज उनके यहाँ दे आर नॉट कंट्रीज विथ सम ग्लोरियस और पास्ट सिविलाइजेशन। उनसे पूछो कि तुम्हारी सिविलाइजेशन कहाँ है, इंग्लैंड से पूछो तो इंग्लैंड कहाँ चला जाएगा, ग्रीस चला जाएगा। अब ग्रीस अलग है, तुम अलग हो, तो उनको पूछो कि तुम्हारा सिविलाइजेशन कहाँ से होता है, तो ग्रीक, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, वो सब तो ग्रीक है, तो बस वही है, सब हम लोग एक ही लाइन से आ रहे हैं। उससे आगे बढ़ जाओ तो रोम, रोम वाले से पूछो तो अब तो कुछ नहीं है बचा हमारा ना, इतना सा है रोम। ग्रीस भी कुछ नहीं है, कहते कुछ भी नहीं, हमारी तो हालत खराब है, हमें तो कोई इज्जत भी नहीं करता। बट इफ यू लुक एट कंट्रीज विथ ग्रेट सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ, तो दो हैं अभी देश में विच आर स्टिल, उसमें भी एक जो है वो इट्स नॉट अ लिविंग सिविलाइजेशन, उसने अपने आप को एकदम बदल लिया है, चाइना, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। बट देयर इज ओनली वन लिविंग सिविलाइजेशन which remains still intact in the world, that is India, which means India still practices all its civilizational, बहुत सारी चीजें खत्म भी हो गई होंगी because of the forces of history, but still we are a living civilization। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो डेमोक्रेसी आया है वो एकदम यूनिक है, और ये केवल हमारे यहाँ ही चल सकता है, क्योंकि साउथ एशिया में और भी देश हैं, लेकिन वहां देखो डेमोक्रेसी कहीं नहीं चलता। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने से पहले चली जाती है, क्यों? क्योंकि उनका एक अपना अलग स्टाइल है डेमोक्रेसी का, है ना। वो प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री को बनाते हैं जो प्रधानमंत्री शायद मतलब किसी के यसमैन टाइप से बिहेव करें, क्योंकि वहां पे आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि पावर कहाँ है ना। पावर इस्लामाबाद में है या रावलपिंडी में है, तो अभी भी वो टसल है। हमारे यहाँ क्लियर है कि पावर दिल्ली में है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, बट वहां पे अभी भी डाउट है। तो बाहर के लोग, जैसे हमको भी किसी से बात करना हो तो हमारे पास भी यही कंफ्यूजन है, इसलिए हम बात ही नहीं करते। वो कहते हैं पहले तुम एक बार क्लियर कर लो कि हमें रावलपिंडी में बात करना है या इस्लामाबाद में बात करना है। तो जब तक वो क्लैरिफाई होगा तब तक वो क्या करेंगे, 2-4 प्रधानमंत्री अपने और भी मार देंगे। तो उनका एक इतिहास रहा है, उनके यहाँ जो प्रधानमंत्री बड़ा पॉपुलर हो जाता है उसको मृत्यु दंड दे देते हैं, है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो और अभी इमरान खान साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं, और ये माना जाता है कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन चुनाव होता है तो उनकी पार्टी को सीट ही नहीं आती, ऐसी पॉपुलैरिटी है। सीट किसको आ जाती है, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, और ऐसा व्यक्ति है जो कि देख के लगेगा कि उसको चार्ली चैपलिन का रोल मिलना चाहिए। और सोचो कि जो काम चाटुकारिता की बोलते हैं हम लोग, कि आप नॉर्मली नहीं करते इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह रहा है कि ट्रम्प साहब दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज, और पीछे से ट्रम्प साहब सर हिला रहे हैं। मतलब दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। मतलब नोबेल पीस प्राइज मिले ट्रम्प को, हाँ, जिसने कि पूरा जो दुनिया है अभी उसको धकेल दिया है क्राइसिस में। मतलब रोज भारत के लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है कि किसी दिन हमारा गैस सप्लाई बंद हो जाएगा, हाँ, हमारे पास क्रूड की कमी हो जाएगी, बिकॉज वी हैव अ रिजर्व व्हिच इज नॉट लाइक व्हिच इज गोइंग टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ क्राइसिस। हु हैज क्रिएटेड दिस? वी हैव नॉट क्रिएटेड इट, बट हु विल पे द प्राइस फॉर इट? विल पे द प्राइस फॉर इट। अमेरिकन विल दे पे द प्राइस? कुछ भी नहीं। अमेरिकन मस्त है, वेनेजुएला को उन्होंने अपना रात में उठाया, वहां के प्रधानमंत्री को कहा कि चलो तुम, उन्होंने कहा हमारी पत्नी को भी ले लो, कहा चलो, और उसके बाद उनका पूरा गैस, क्रूड रूट सबको अपना रख लिया, और रेयर अर्थ मेटल्स। अब उनके पास ना क्रूड की दिक्कत ना गैस की दिक्कत। अच्छा, इतना ही नहीं किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि क्यूबा, तुम सब सारा सामान खरीदते हो वेनेजुएला से, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्यूबा में एक अलग क्राइसिस है, पूरा अंधेरा है। वाई? बिकॉज दे हैव नो एनर्जी। अब सोचो क्यूबा में अगर एनर्जी नहीं है तो कितनी मुश्किल हो रही होगी। देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स वेयर कैंसर पेशेंट्स आर देयर, chemo has to be performed, chemos are not performed, no electricity, all these machines which would operate with electricity, they're not operating. So we are into a very difficult time, and this person is saying, जो हमारा पड़ोसी है, कि the person responsible for all this, he deserves a Nobel Peace Prize। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है दुनिया के लिए? तो क्या है कि जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करेंगे, हाँ। तो आपके यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ से आ सकती है? ऐसे लीडर को तुम अपना देश का प्रधानमंत्री चुनते हो, है ना। मतलब हमारे देश में अगर चुनाव हो और प्रधानी का चुनाव हो, उसमें उसको हरा दिया जाएगा, यानी वो हमारे देश के लोग कहेंगे नहीं, तुम्हारा मैच्योरिटी कम है पॉलिटिकल, वोट नहीं करेंगे लोग।
प्रधानमंत्री. Why? Because everything is fixed. It is orchestrated democracy over there. बांग्लादेश में तो आपने देखा ही है कि विद्यार्थियों को लगा कि नहीं तुम ठीक प्रधानमंत्री नहीं हो, एक दिन निकले और प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया और उन्होंने कहा कि नहीं तुम प्रधानमंत्री रहोगे देश के, उसको बना दिया प्रधानमंत्री और फिर वहां चुनाव हुआ और अब एक नया प्रधानमंत्री. और प्लस वो प्रधानमंत्री कैसे बना? बाय बैनिंग दी अदर पार्टी. दूसरी पार्टी जो वहां पर जिसके प्रधानमंत्री थे उसकी पार्टी को कहा यू आर इलीगल सो यू विल नॉट कंटेस्ट इलेक्शन. तो मतलब फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, गोलकीपर को कहा इसमें कोई गोलकीपर नहीं होगा, जहां मर्जी वहां से बॉल मारो गोल होगा, और चुनाव जीत गया. डेमोक्रेसी. इज इट डेमोक्रेसी? हम अपने देश में चुनाव कराएं और कहें कि सारी पार्टी बैन हो गई और उसके बाद हम चुनाव जीते और कहें कि वाह 99.9% वोट से चुनाव जीते. ऐसा चुनाव कौन जीत सकते हैं? केवल किंग जोंग उन. ओनली ही कैन विन दैट काइंड ऑफ एन इलेक्शन. नो डेमोक्रेसी. इसलिए इंडिया इज अ यूनिक डेमोक्रेसी. डिस्पाइट ऑल द फॉल्ट लाइंस वी हैव जस्ट सरप्राइज द इंटायर वर्ल्ड. और अब तो देखो पूरी दुनिया ये बात मानती है दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. अब हम लोगों को समझाने लगे हैं वी आर नॉट ओनली द लार्जेस्ट, वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. Why? Because democracy, we are not practicing democracy. We have actually invented democracy. Democracy prevailed in our councils that used to be operated during the ancient era. है ना? तो हम अब ये कहते हैं कि we are not somebody who has inherited democracy from outside. तो democracy हमारे यहाँ पहले से ingrained है. We are practitioners of democracy. So that is unique. इसलिए जो बहुत मॉडर्न एरा के ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो कौन है? ब्रिटेन है. यानी मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ आई? ब्रिटेन में आई. ब्रिटेन ने डेवलप किया बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ, वेस्ट यूरोप में हुआ, इंग्लैंड में हुआ. तो जब कैपिटलिज्म आया आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो कैपिटलिज्म ने एक नया स्टेट का निर्माण किया. दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट एंड इन दैट स्टेट व्हाट डेवलप्ड वाज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट. That's why I'm saying that Britain has a different political culture altogether. Britain's history tells you that people have great faith and admiration in the institution called the legislature, which is the parliament. That is why they do not need any written constitution. वो भी उनके इतिहास में है, जरूरत ही नहीं है उनको. They have different laws, common laws, and that operates over there. Plus, they have great faith in parliament, and people are very politically aware citizens. So, the public pressure, the civil society groups, they act as a balancing force if somebody wants to move out of range in terms of misusing their authorities, making a law that is very arbitrary and against people's interest or rights. That cannot be done because it will give the British society, it will actually be a very bad impression, a very bad public opinion which will prevail in the British society. So no political parties would actually dare to take that particular step. ठीक है? तो इसलिए लिखिए नोट. नोट उसी पे जहां लिख रहे हैं उसी के नीचे लिखिए नोट. NOT, नोट. This doctrine relies, RELIES, this doctrine relies heavily on the good conduct of the legislature as well as the existence of a strong civil society and a strong public opinion to check the arbitrariness arbitrariness of the legislature. ठीक है? अब इसी के साथ ये समझ में आया ये डॉक्ट्रिन. नाउ वी हैव अ डॉक्ट्रिन ऑफ
यहां पर जो जुडिशरी होगा, जुडिशरी इस डॉक्ट्रीन में दे वुड हैव वाइडर पावर्स. वहां मैंने क्या लिखा था? They will have limited powers. So judiciary here will have wider powers. And the next thing is, where is the origin? The origin is USA. So it is basically originated from the US constitutional practices. Now, suppose if a person challenges the deprivation of life or personal liberty, then the judiciary, जो 3 टेस्ट हमने लिखे हैं वो तीनों टेस्ट अप्लाई करेगा. जुडिशरी विल अप्लाई the above 3 tests. Judiciary will apply the above 3 tests. But what will they do? But additionally, the judiciary will examine the fairness, justness, or reasonableness of the law applying the principles of natural justice. So, what will the court do? They will apply the principles of natural justice and they will also examine. This is like additional, इसलिए wider powers है. And if even the above 3 tests are passed, but if the law is not found to be just, fair and reasonable by the application of the principles of natural justice, then what will happen? That law will be declared unconstitutional, illegal, null and void. That is what will happen with countries which operate on the doctrine of due process of law. The American courts operate on the principles of due process of law, and in Menaka Gandhi case, when the Supreme Court gave relief to Menaka Gandhi about impounding her passport and not allowing her to travel abroad, then that was a fine case where the Supreme Court also invoked the doctrine of due process of law, especially in addition to the doctrine of procedure established by law which prevails in our constitution. So that is why we say that in our country, now if a law which is depriving somebody of their life or personal liberty is challenged in the court of law, then now the court will examine the law not only on the above 3 principles which applies in the procedure established by law, but the court will actually invoke the additional principle to check the fairness, justness or reasonableness of the law, implying the principles of applying the principles of natural justice. Now that is what we understand with the doctrine of procedure established by law. तो यहां पर क्या हुआ? Judiciary cannot protect you only from the arbitrary action of the executive, but also from the arbitrary action of the legislature. That's why this is more of a secure doctrine which can limit the authorities of the state and help prevent the rights of the individual or people. So judiciary will not only protect individual from the arbitrary action of the executive, but
also from the arbitrary action of the legislature. Okay, that's what we get to learn from this particular case. Okay, ठीक है, अब हमें डिफरेंट केसेस पढ़ के समझना है that how you could see the extension or expansion in the meaning of right to life. So where does the court in different judgments actually enhanced, or they used the idea of right to life to actually provide you a range of rights under the idea of right to life, and we'll see those cases to understand how the courts actually looked at the issue of right to life and gave it a wider interpretation to include so many rights with respect to right to life. So the first question for us is to examine that if you have a right to life, then do you have a right to die? याद करो 19 में हमने क्या कहा था, इफ यू हैव अ राइट टू स्पीक you also have a right to remain silent. Now I'm applying the same logic here, which means if you have a right for something, you also have a right not to do something. So if you have a right to life, then do you have a right to die? यानी क्या हो सकता है ये अधिकार कि हमें मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए, सिमिलरली टू राइट टू लाइफ? क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, तो क्यों होना चाहिए? आपको जीवन का अधिकार दिया गया, तो जीवन खत्म करने का अधिकार क्यों रहेगा? तो फिर राइट टू लाइफ की वैल्यू क्या रही? जीवन का अधिकार है ना। हाँ, तो डिग्निटी तो शब्द लिखा हुआ नहीं है, तो अपने मन से क्यों लगा देते हैं कुछ भी जो नहीं है? हाँ, इनबिल्ट है वो कि कुछ अपने मन से भी लगा के ही आगे बढ़ते हैं। कौन सा चिप लगा हुआ है? हाँ? एलोन मस्क से खरीदे थे चिप, इनबिल्ट है। बताएं, होना चाहिए राइट टू डाई? नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो फिर राइट टू लाइफ का वैल्यू क्या रहेगा जब मरने का ही अधिकार होगा? अच्छा ठीक है, चलो मरने का अधिकार मान लेते हैं। कोई भी अधिकार अगर होता है तो किसी की ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट योर राइट। तो अगर आपका मरने का अधिकार होगा तो उसकी भी प्रोटेक्शन करने का किसी को ड्यूटी होना चाहिए कि आपको मारने के लिए वो कंडीशंस बनाए कि यहां पर तसल्ली बख्श आपको मौत दी जाती है या मौत की आगोश में आपको सुला दिया जाएगा। तो ये आमतौर पे जब राइट्स आपको दी जाती है तो राइट्स का प्रोटेक्टर कौन होता है? स्टेट होता है। तो राइट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी? स्टेट की। इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी? तो अगर आपको राइट टू डाई हो गया तो अब आपको मारने की ड्यूटी किसकी? तो स्टेट आपको जीवन देगा या आपको मारने के पीछे लगा रहेगा? हाँ? तो स्टेट कहेगा भाई बहुत आबादी हो गई है भारत की, 8 बजे अनाउंस करेंगे प्रधानमंत्री टीवी पर कि भाई देखो देश का आबादी बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो जो लोग मरना चाहते हैं हाथ उठा दो। हम एक मोबाइल पे सबको मैसेज भेज रहे हैं, उसमें यस या नो लिख दो, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, बाकी स्टेट की एजेंसी आएगी वो अपना काम कर देगी। ये सब संभव है, ये स्टेट का काम है। किसी भी सिविलाइज समाज में ये करेगा राज्य? तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, डू यू हैव अ राइट टू डाई? द आंसर इज नो। बट है ना, हमारे देश में एक सेक्शन हुआ करता था 309 आईपीसी में। 309 में यह कहा जाता था कि अगर मान लीजिए आपने अपने आप को मारने की कोशिश की और उस प्रक्रिया में अगर आप चल बसे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बच गए तो फिर क्राइम है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसको कहा जाता था अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी सुसाइड के लिए कोशिश किया ना, बच गए तभी तो अटेम्प्ट कह रहे हैं। यानी अगर अटेम्प्ट आपका क्लियर हो गया, आप
पार कर गए, तब तो क्या सजा मिलेगी किसी को? तब सजा उसको मिलेगी जिसने अबेटमेंट टू सुसाइड, भाई किसी ने उसको मोटिवेट किया, किसी ने उकसाया, तुम जी कर क्या करोगे, तुम्हारा जीना बेकार है, और इमोशन में आके कोई व्यक्ति अंडर प्रेशर ही गेव हिज लाइफ, तो अबेटमेंट, उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बच गए तो फिर एक दिक्कत है। तो लीगैलिटी ऑफ सेक्शन 309 को चैलेंज किया गया इन अ केस, हालांकि आपको जानना नहीं है, पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस की बहुत वैल्यू नहीं है, बस इसको मार्जिन पे लिख लीजिए, पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994, और पुराना केस है ये। और इस केस में एक्चुअली पिटिशनर ने यही आर्ग्यूमेंट किया, इफ आई हैव अ राइट टू लाइफ देन आई आल्सो हैव अ राइट टू डाई, एंड इफ आई हैव अ राइट टू डाई देन सेक्शन 309 इज इलीगल, है ना। तो क्या रेज किया गया इस पिटिशनर ने? उसने कहा कि सेक्शन 309 इज unconstitutional as if I have a right to life, then I also have a right to die. तो इसलिए अगर मैं कोशिश करूंगा और मैं अगर बच गया तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज माई फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, आई हैव अ राइट टू डाई एज वेल। कोर्ट ने इसको ठीक माना, कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, और कोर्ट ने ये कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 309 इज इलीगल। तो इसलिए ये बड़ा एक विचित्र जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ऑलरेडी एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिसका जजमेंट 2 साल के बाद आया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। ये केस जानना है हमें, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996. So what do we see in this particular judgment? It's an interesting judgment. So in this case the same issue had come, that under article 29 do we have a right to die, which means that if I have a right to live then I also have a right not कि नहीं। इस केस में कोर्ट ने बहुत एक बैलेंस जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा देयर इज अ डिफरेंस, कोर्ट मेड द डिस्टिंक्शन, कोर्ट सेड दैट राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई दे आर डिफरेंट। आर्टिकल 21 गिव्स यू राइट टू लाइफ। Life is something which is having a meaning, which is having an existence. When you die, there's no existence. The existence is completely gone. It is vanished. So the court said that, yes, the state therefore should punish those people who abet suicide, who are, ensuring that a person takes away their life voluntarily. लेकिन उसके बाद दूसरी बात कोर्ट ने कही कि हमें ये पता है that if somebody is doing or somebody is actually planning a suicide, that is under so much of mental pressure, and so that person should not be punished. उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए. This should be treated as a case where they should be given counseling by the state. They should be rehabilitated by the state. है ना? इसलिए इस जजमेंट में दो बात स्पष्ट हो गई, that you don't have a right to die. है ना? तो केस सेम है. यहां तक एक्चुअली केस में कोर्ट ने ये मान लिया था that you have a right to die under article 21. कोर्ट ने यहां कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट made a distinction मतलब difference between right to life and right to die. कोर्ट ने इसको डिस्टिंक्ट किया. उन्होंने कहा राइट टू लाइफ और राइट टू डाई दोनों एक जैसा नहीं है. पहली बात ये उन्होंने कहा. इसीलिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अंडर आर्टिकल 21 यू हैव अ राइट टू लाइफ व्हिच डज नॉट इंक्लूड राइट टू टेक अवे योर लाइफ. है ना? तो कोर्ट बहुत स्पष्ट है. कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 21 यू हैव अ राइट टू लाइफ बट यू डू नॉट हैव अ राइट टू टेक वंस लाइफ. आप अपना जीवन नहीं
खत्म कर सकते। ये राइट आपको आर्टिकल 21 देता ही नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 21 गिव्स यू अ राइट टू लाइफ, नॉट राइट टू take away your life. So there's a difference between life and death. So you have a right to life, you don't have a right to die. So this question was settled by the court. Plus the court also said that that state should intervene in such cases, यानी यहां पर there is a voluntary efforts for suicide, state should intervene in such cases and provide help, है ना, ताकि इस तरह के केसेस को हम कमजोर कर सके। हेल्प किसको? हेल्प दोज इन डिस्ट्रेस, है ना, तो जो डिस्ट्रेस में है उनको हम हेल्प करें। स्टेट का ये काम है। जैसे स्टेट क्या करे, कोई मान लो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर रखे, वहां पर लोगों को काउंसलिंग दे, थोड़ा रिहैबिलिटेशन के लिए कोशिश करे, so that people actually, because this is something which is a huge problem in terms of mental distress, where people actually at that heat of the moment might take such an extreme step. So state said that this is what we need to do, we have to provide people with the necessary help. ठीक है, यहां तक कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई 2008 में, 2008 लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई और उसने भी ये कहा कि लॉ कमीशन रिपोर्ट, and this report found section 309 as inhuman. उन्होंने कहा कि नहीं, ये अमानवीय है। भाई कोई व्यक्ति पहले से जो तकलीफ में है, हम उसको कैसे और तकलीफ दे सकते हैं by arresting that person, taking him to prison. So this is not something which is human, this is very, very inhuman. And that's why what did the government do? The government passed an act that is called Mental Health Care Act. Mental Health Care Act 2017 was passed. देखो इसमें नाम भी उन्होंने क्या लिखा है कि इस तरह के व्यक्ति को हम मेंटल हेल्थ केयर देंगे। कौन देगा? स्टेट देगा। यानी स्टेट ने लॉ कमीशन की बात समझी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझा और the parliament came up with this very significant law that was called Mental Health Care Act 2017. And now it said that who will take the responsibility of rehabilitation and care of such people? It is the state, है ना? So the state would take the responsibility of providing counseling and care to such people, है ना, ताकि सेक्शन 309 का इस्तेमाल ना हो सके. We could save those people from the use of section 309. So this should be treated as a issue of mental health, and such people should be taken into those healthcare centers which is to be established under the Mental Health Care Act 2017. And so this will provide a ground where people will be able to get counseling from the state, they will be able to get treatment from the state will try to rehabilitate such people, है ना. लेकिन अभी भी अगर आप देखें कि if you have a BNS, यानी अब तो IPC नहीं रहा, तो 309 तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो BNS बना, भारतीय न्याय संहिता, उसमें हमने इसको अलग नहीं किया. हमने क्या किया है, 108 is like abetment to suicide, तो वो अभी भी पनिशेबल है. और सेक्शन 224 में हमने ये कहा है, जो BNS का सेक्शन है 224, we have said that any kind of suicide with the intent of compelling or with the intent of ensuring that a public servant is not able to discharge his duty, then that is punishable in the form of imprisonment for up to 1 year or fine or both. तो अभी हमने क्या किया, सुसाइड को कहां पर जोड़ दिया, to this place where if somebody is like, I am a public official and I am discharging my duty, so anyone who is basically trying to commit suicide,
in order to stop me from performing, then it is a case of suicide, attempt to suicide, and that is punishable. Otherwise, attempt to suicide, like जो previous case में था, law में था, that is not punishable now. You know, so if you are seen to be attempting a suicide, the state has the responsibility to provide you rehabilitation, help, so that you can actually again come on track and rejoin the mainstream. Plus, in case under the BNS, if you are compelling somebody to not perform their public duty because you are threatening them that if they perform the duty, then you are going to commit a suicide, then the case where it is punishable still. Or abatement is punishable. अगर किसी को आपने उकसाया है to commit a suicide, तो जो abettors हैं, they will be punished under the law. ठीक है, लिखिए note, NOT note लिखिए, फिर भी under BNS, BNS means भारतीय न्याय संहिता. Under BNS, section 108 deals with the abatement to suicide, abatement, ABETMENT. abatement मतलब क्या होता है? सहायता करना, है ना? Abatement to suicide, which is a punishable offense. Punishable offense. Next point. Section 2 to 4 of BNS. 2 to 4 of BNS also states that attempting to commit suicide with the intent to compel a public servant not to discharge their official duty shall be punishable by imprisonment for up to 1 year or fine or both. तो ये डिबेट क्लियर है? Do you have a right to die? You don't have a right to die. ठीक है? By any stretch of imagination. जीवन जीने के लिए मिला है ना? It's not as if that you have to voluntarily end it, because if you are born, definitely death is going to come. It's natural process. So it has to be by a natural process. You should not do anything that should voluntarily end your life. Now there is a problem question, which is the second question comes, which is about, और हम अच्छी बात नहीं कर रहे, we are talking about death, which is not good thing, but that's a compulsion. The second issue is right to die with dignity, है ना, जो कह रहे थे आप लोग, यानी आप पहले ही एक पायदान ऊपर जंप कर रहे हैं. Right to die with dignity. So do you have a right to die with dignity? Why the word dignity is used here? Because sometimes keeping you alive will be undermining the dignity of your life. आप जीवित रह नहीं सकते, लेकिन आपको जबरन जिंदा रखा गया है. कैसे रखा गया है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम में. आप खा नहीं सकते, यू आर इन अ वेजिटेटिव स्टेट. आपको फोर्स फीड किया जा रहा है, थ्रू डिफरेंट पाइप्स, थ्रू द नोज. You are actually given food, you are given liquid, you are given all kinds of medication, and you are non-responsive. You are completely lying in a vegetative state. That took for so long, longer durations. Now, would you say that is a test case of giving you a right to life? क्या हम ये मान लें कि this is the life or this is life? This is not life.
जब आप वेजिटेटिव कंडीशन में हैं, beyond any chance of revival, then that is a case where you have to take a call. So do I force you to leave or you have to leave naturally? That's a question. If I am forcing you to leave, which is by means that is not natural, and you are not knowing because you are not aware, you are not into your consciousness, so you are not going to decide for yourself कि यहाँ पर क्या decision होना चाहिए. Then there is a very important question that comes before the medical fraternity as well as the legal fraternity, that is my life should be treated with dignity or not, because this is completely taking away the dignity out of my life, because I have been given treatment which is very indignified. You are forcing me to survive. That's where the question comes of euthanasia. That is, do I have a right to die with dignity? तो ये बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है यूथनासिया, और अभी भी केस है हरीश राणा केस, जहां पर आपने देखा कि कोर्ट ने फिर से इस बारे में स्वीकृति दी है that the life support system has to be taken out of the young fellow, because the chances of his revival is negligible, and therefore what they have chosen is euthanasia. Euthanasia means good death, यानी कभी कभी मृत्यु जीवन से बेहतर है ना, because what you are doing is you are not living, you are forced to live, which means you have already died. It's just that now you have to be given dignity in death, so that you are not completely forcing somebody to live on some external support systems, because you are not actually conscious, you are in a completely vegetative state, and so you are not the one who is deciding for yourself. So what will happen? अब यूथनासिया दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्टिव हो सकता है, दूसरा पैसिव हो सकता है ना. एक्टिव का एग्जांपल ये है, जैसे वी आर इंजेक्टिंग अ पॉइजनस इंजेक्शन, है ना. किसी व्यक्ति में हमने उसको इंजेक्ट किया and the person is injected with a poison. So what will happen? Gradually the person will actually lose himself. That is called active euthanasia, because you are actually performing some activity by entering into the body of the individual. So you are injecting something. इसको lethal injection भी कहा जाता है, यानी इसी को, यानी जो मैंने कहा ना कि injecting a poisonous injection, ये हालांकि थोड़ी इंग्लिश खराब है इसमें, आप इसको ये कह सकते हैं इट इज कॉल्ड अ लीथल इंजेक्शन, यानी जिस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते ही आपकी मृत्यु हो जाए, वो है लीथल इंजेक्शन. और पैसिव का मतलब है कि विड्रॉवल ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम. So sometimes you may survive on a life support system, and passive means that you're not actively doing anything. जिस चीज पर आप survive कर रहे हैं, that support system is taken away. So that now you are being seen that can you survive naturally? The answer is no, because the person who is surviving on life support system, they will actually not be able to survive even for a second if that life support system is taken away. So this is called passive euthanasia. In our country, we'll look at the judgment, but चाहे कुछ भी हो, only passive is allowed. This is not allowed. अभी भी हमारे देश में active euthanasia allowed नहीं है. तो we don't use lethal injection for actually giving death to someone. In our country, the only euthanasia which is allowed is withdrawal of the life support system. In the immediate kit also, अभी जो केस है उसमें भी आप देखेंगे this is a case of withdrawal of the life support system of this person called Harish Rana. Okay, so what we see here, कौन सा केस है जिसमें कोर्ट ने पहली बार ये माना that you have a right to die with dignity? That is Aruna Schonborg case. Aruna Schonborg versus Union of India 2011. Aruna Schonborg versus Union of India 2011.
So Aruna Schonborg is a nurse, very young, very lively, and she is working in a very reputed hospital in Bombay. When the shift is about to change, when she is into a particular room, then one of the person who is the colleague of Aruna Schonborg, he rapes Aruna Schonborg. And after rape, he actually uses a very hard instrument, and that hard instrument is used to, he uses that instrument to actually ensure that she dies, and therefore he hits Aruna Schonborg on the head. Now, so much of blood has passed, and she's like lying there in an unconscious stage. So now somebody's come after so long for change of shift. And so somebody gets to see that Aruna Schonborg is lying into that particular state. So he picks or she picks Aruna Schonborg, takes to the emergency, and because she's like a local hospital nurse, so everybody knows her. So now the doctor team assembles and they see that she's still having life, like she's not gone. And so they start the treatment. But Aruna Schonborg, despite all efforts, she never shows signs of recovery. She's still lying on the bed for so long, for so long, which means I'm saying that she's there on the bed for more than 2 decades, roughly 2.5. So Aruna Schonborg is in her 20s, early 20s when this incident happens. And now when we are discussing the case, she was almost, in late 30s and early 40s. So it's more than 2 decades which has passed with Aruna Schonborg lying on the bed. Now there is an emotion because the nurse says that, they are all going to take care of Aruna Schonborg, so she is not going to die. She'll revive one day. And because, she is one among them, so all the nurses, they take extreme care of Aruna Schonborg. सारी nurses हैं वो एकदम सब मिलकर के उसका care कर रही हैं बारी-बारी से, so that their duty is not disturbed, and so that she is getting the best, you could say, support. Plus the doctors are also treating her, but she is completely in a vegetative state, no signs of recovery whatsoever. So this is a petition that goes to the Supreme Court, and the Supreme Court actually listens to the petition and now comes up with a very, very influential verdict. हालांकि इस केस में अरुणा शॉनबॉग को पैसिव यूथनासिया नहीं मिला because the nurses said that they are still going to take care of her. So, but the Supreme Court in this case accepted the petitioner contention that India should allow passive euthanasia, and the court in this case allowed passive euthanasia, but for only those people who are terminally ill, are in a vegetative state for a long period of time, and the court laid down the guidelines, है ना, कि कैसे पैसिव यूथनासिया दी जाएगी, उसके लिए कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया. So if you really want somebody to be given passive euthanasia, then the court said that we are laying down the guideline, you have to follow the guideline, and through that guideline passive euthanasia can be granted. So which means passive euthanasia became legal in India after this judgment. Secondly, the court also reiterated that active euthanasia is illegal, it is not allowed in India. The guidelines said that yes, if you really want to take away the life support system, that is passive euthanasia. So Aruna Schonborg's life support system has to be taken away. The court said that for that you have to file a petition in the High Court under 226. Article 226 में आप High Court में 226 मतलब 226, 226 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं. एक बच्चा मेरे से कहता सर 226 का मतलब 2 से 6 तक है, क्योंकि 2 से 6 तक तो फिर हम देखते हैं कि यूनियन एंड टेरिटरी है और उसके बाद फिर सिटीजनशिप है. हमने कहा कि बहुत $1 million क्वेश्चन है. इट इज 226, 226, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 226, 226. सो अंडर 226 द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट a petition is to be filed in the High Court. High Court में petition लगेगा और फिर जो High Court के Chief Justice हैं, he will constitute a bench of minimum 2 judges. उनके पास petition आएगी तो guidelines में तो he will have to constitute a 2-judge bench. फिर bench will decide over the petition, but before that they will have to examine a report given to the judge by a team of doctors. ठीक है. और कितने डॉक्टर्स होने चाहिए?
team of at least 3 doctors, और उस टीम ऑफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि दिस पेशेंट इज नॉट going to recover, this patient condition is beyond recovery, which means every treatment that we are giving, it does not show any result, and therefore this is a case where the patient is beyond recovery. ये सर्टिफाई करना होगा डॉक्टर को, फिर ये 2 जज बेंच उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे, एंड देन दे विल एक्चुअली send a notice to every family member, and after their consent passive euthanasia can be given. ठीक है? So this is like one first attempt made by the Supreme Court to actually allow the passive euthanasia to take place in our country, you know. And if you see the present case, there is this young boy called Harish Rana, and he was on bed, he was in coma for 13 years, यानी a decade and 3 years, और 13 साल से वो कोमा में थे, और इसीलिए now what the Supreme Court has done, he has allowed the withdrawal of, you know, life support system. So this is like the first case of a passive euthanasia implemented in India as per the rule that the Supreme Court has already laid down in Aruna Schonbach case के हमारे देश में passive euthanasia is illegal. It will not be considered as legal. It will not be considered as illegal, है ना? और again, I think people have started debating this issue that legally do you have a right to die or not. But I think the court has made it amply clear you don't have a right to die. It's only such extraordinary cases, under extraordinary circumstances, you have a right to die with dignity, which means normally you don't have a right to die as per the evolving legal framework where you have a right or you have a choice to end one's life. Now, Harish Rana is not there to take that decision on his own. He is not there to make that choice on his own. So, who is making that choice? The members of the family are making the choice. And therefore, now the Supreme Court examines the case, and they said that yes, when it comes to dignity of one's life, we can allow such a case to exist, which means we can allow passive euthanasia where and in this case, the person has been in a persistent coma. Coma is like a vegetative state where the person cannot listen you, cannot respond to what you are saying. You know, it's more like a condition where the person does not function, his brain is not working, he's just like surviving. So this is like a very nearby case. Ghaziabad में ये व्यक्ति इनका घर है, and courts have actually allowed passive euthanasia to take away the life support system, and that's basically how, you know, this ruling was made with respect to passive euthanasia. But the origin of, or the, you know, origin of all this idea comes from where? It comes from the Aruna Schonbach case. Aruna Schonbach is the case through which we can actually discuss this issue of passive euthanasia. And अगर आप इस व्यक्ति को देखें तो he's only 32 years of age. So it's like a very very young life. और पिछले 13 साल से यानी 19 साल की उम्र में ये हादसा हुआ था उनके साथ, and after that he could never recover. You know, so he fell down from a height, and court actually when the court gave a detailed directive in this case as well. तो एक दो केस अभी हम लोग और पढ़ेंगे, यानी अभी ये बहुत recent case है, तो die with dignity वाला issue आपको समझ में आना चाहिए. लेकिन इसके लिए एक और केस आया है जो इसके बाद आया, अरुणा शॉनबॉक के बाद, common cause case. That is also very interesting. Not interesting, that is also very important for us to understand the concept of right to die with dignity. ठीक है, तो पहले ये केस लिखें आप. बोलो, हाथ क्यों दिखा रहे हो? हाँ, हाँ. It does not have a right to die with, then you don't have a right to die. तो वो तो अपना पर्सनल चॉइस है ना, तो तुम्हें कोई दूसरा आदमी थोड़ी ट्रीट कर देगा. हाँ, तो व्हाट कैन वी डू देन? तो हम लोग सब उसको उसका ट्रीटमेंट करवाएं? नो, स्टेट हैज नो बिजनेस इंटरफेयरिंग. देश की आबादी कितनी है पता है? हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड गुड हेल्थ? तो स्टेट जो कर सकता है, स्टेट हॉस्पिटल्स बने हुए, बट यू हैव टू गो टू दैट हॉस्पिटल. हॉस्पिटल विल नॉट कम टू योर होम.
when you'll say कि no हमको ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो स्टेट बोलेगा अरे नहीं आपको तो हमें ट्रीटमेंट कराना होगा. That is not the case. It's about, here we are saying that when your life becomes undignified, where you are forced to live, this is a case where you are in a vegetative state. आपके पास कोई disease है तो you are not in a vegetative state. People can have disease. There are so many people who are diseased. They struggle with their lives. वो कोशिश करते हैं जीने का. So that is like, उसमें उसको वो अधिकार नहीं है कि वो यूथनासिया ले लेगा, because he is not surviving on the life support system. He is like conscious, he is taking medicine or she is taking medicine and they are fighting every day. है ना. बहुत सारे लोग अपने विल पावर से रिकवर भी कर जाते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं. तो then after a certain state or stage they pass away. That's a separate issue. We are not talking about that. It is like you are having a disease, you are taking a treatment. I am saying that suppose you are in a state where you are not even conscious, है ना, you are in a vegetative state, that too for a very long time, and you are not showing any signs of recovery, then should there be a call? You are only surviving on life support system. You know that once it is removed, you will not survive even 1 second. Now, where is that call? Can we take the call of removing that life support system and ensuring death of the person or not? That's the question we are asking. ठीक है. लिखिए. The Supreme Court allowed passive euthanasia only for the people who are terminally ill, which means no sign of recovery, no consciousness, terminally ill, or in a vegetative state, vegetative, vegetative state. Full stop. The court also stated that active euthanasia is illegal in India. Active euthanasia is illegal in India. Next point. The court also laid down guidelines. For granting passive euthanasia. क्या guidelines है? Number 1, the decision regarding withdrawal of life support system can be applied under Article 2 to 6 in the High Court. Next point. After the application is received, next point, after the application is received, the Chief Justice of High Court should constitute a bench of minimum 2 judges. Next, the bench would decide on the petition
after examining the report, of a team of three doctors, certifying that the patient is beyond recovery. Next point, every family member must be issued a notice by the bench. फिर एक और डिसीजन आया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, और इसमें कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट upheld the decision of Aruna Schonborg and court recognized the right to die with dignity as a fundamental right. कोर्ट ने कहा कि right to die with dignity is a fundamental right. We upheld the verdict which we have made in the Aruna Schonborg case. What is very interesting here, इसमें कोर्ट ने ये मान लिया कि if somebody has a living will लिखते हैं ना आप लोग एक विल बनाकर जाते हैं. विल कब बनाते हैं? जब वो पूरे होशोवास में रहते हैं. तो उसमें वो भविष्य में क्या करेंगे उसका डिसीजन उसमें लिख देते हैं. तो अगर किसी व्यक्ति ने एक विल बनाया और उसमें ये लिखा कि अगर उनकी कोई ऐसी स्टेज आ गई लाइफ में तो उस वक्त दे विल नॉट टेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. नाउ कोर्ट एक्सेप्टेड that kind of a concept of living will as right to die with dignity. So see, whenever a person goes in a vegetative state, then you know that the person is not there to take a decision for himself. So if I want to write in advance that when I will go into that kind of a stage, please don't treat my body with such cruelty by forcing me to live under so many extraneous machines or so many life support system. Now, if such a stage do come to my life when I am not in a position to take the decision, so I am writing this in the will, and this will court recognized will have a legal validity, and that person could be given passive euthanasia where he may be denied the life support system, or if like they have tried with a life support system and if the person says that he don't want to continue with such a living, then it can be removed from them so that the person's life is given dignity. So I think this is one of the most important case where the concept of living will as a legal instrument was accepted even in the case of passive euthanasia, where the Supreme Court expanded the concept of right to die with dignity, accepting any such legal instrument in the form of living will as a means through which a person can write and he can be given passive euthanasia in his future when he is not able to take decision or decide for himself. ठीक है, लिखिए the apex court, इस केस का नाम लिख के लिखना है. The apex court accepted A double C वाला accept, EX वाला नहीं, accepted the concept of a living will, which would specify what actions should be taken if a person is in such a state, where he/she could not
could not decide, he/she could not decide for themselves. Next point. The apex court also upheld Aruna apex court also upheld Aruna Schonberg judgment and recognized the right to die with dignity within the Jain community, if you will see, there is a practice called Santhara, or Sallekhan. This is known by two names, Sallekhan or Santhara. So, actually, this Santhara or Sallekhan as a practice was banned by Rajasthan High Court in 2015. Rajasthan High Court ने इसको ban कर दिया because Rajasthan High Court said that this is more like a voluntary death. This is like a suicide. Because in the Jain tradition, they have a tradition where the person who is undergoing Santhara or Sallekhan, the person gives up food, and water. And you know that there is a time around which you can survive without food and water. So this is like mostly a process through which people actually give up their life, है ना. तो ये एक process है, एक उनका religious practice हम कह सकते हैं, जो Jain tradition में exist करता है. That many of them actually give up their food. आपने हिस्ट्री के किताबों में पढ़ा होगा, काफी लोग जो उस ट्रेडिशन में थे, बड़े बड़े राजा भी जो बाद में जैन बने थे, so even they had at the last stage of their life they had given up food and water. Now कोर्ट ने ये कहा कि we cannot protect these practice because this is not an essential practice of Jainism. है ना, essential practice एक concept होता है हमारे देश में. You have a right to practice your religion. मैं केवल इसको यहाँ पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, although this is a case of religious practice, but I am discussing this here because this is a case where a person is voluntarily giving up his life, because this is about right to die, है ना, although attached with religious practice. So our Supreme Court has given us a very important concept on protecting somebody's religious practice. Court says that what is written in fundamental right as a freedom to practice your religion, court have said it means your essential practice. Not every practice will be protected. You can't come to the court claiming that this is your religious practice, so under Article 25 it needs to be protected. The courts have said no, only essential practice will be protected. Essential practice means that without that practice, the religion cannot be the religion that it is. It means religion will lose its essential character. For example, in Islam, performing namaz is an essential practice. Okay? Because if you take away namaz, then Islam will not exist as a religion that it is. But performing namaz on loudspeaker only, that is not an essential practice. Okay? Because when Islam came up as a religion, there was no loudspeaker. So Islam survived without performance of the namaz on the loudspeaker. So this is what I mean when I say essential practice. So even Rajasthan High Court said that what is Santhara or Sallekhan is not an essential practice of the Jain religion, and therefore there is no need to actually protect this practice. But what has happened? The verdict of the High Court is challenged in the Supreme Court of India, and now the Supreme Court has clubbed so many cases with regards to the religious issue and practice issue. So unless until Supreme Court comes up with a verdict, we are not sure that what is the status of this particular issue. At the moment,
Can the Jains practice Santhara and Sanlekhan? Yes, they can practice because the Rajasthan High Court verdict has been stayed by the Supreme Court. उन्होंने stay लगा दिया उस पे. जब तक Supreme Court इस पर decision नहीं ले लेता, we don't know the outcome. लेकिन जब तक stay लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि that means that it can be still practiced. But this is a case that has two components. One is right to die, the other is right to practice of religion. ठीक है? So Santhara or Salekhan. The Rajasthan High Court, Rajasthan High Court has banned the practice. इस practice का नाम ये has banned the practice in 2015 has banned the practice in 2015 on the ground that it is not an essential religious practice in Jainism but the Supreme Court has stayed the verdict and the matter is still sub judice. Stayed the verdict and the matter is still sub judice. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में. SUB sub judice, JUDIC. जुडिस मतलब, सब जुडिस मतलब अभी भी उस पर फैसला, अंतिम फैसला नहीं आया. That is called sub judice. Okay? फिर लिखिए नोट. हरीश Rana became the first person who has been granted passive euthanasia after being in coma for 13 long years. Full stop. The Supreme Court pronounced the verdict in March 2026, यानी to be precise 11th March को verdict आया था. March 2026, granting the plea for right to die with dignity on the ground that the patient has no hope of recovery. अब नोट में लिखा है ना ये. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट. In 2024, the
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, तो जैसे बहुत सारे देश में क्या है, पैसिव एंड एक्टिव यूथनासिया भी अलाउ है। जैसे वो पूछ रहे थे ना, किसी व्यक्ति का कंडीशन बहुत बुरा है, तो बेल्जियम जैसे देशों में ये अवेलेबल है, जहां पर a patient can be granted if he is facing a very problematic disease, and his life is becoming more problematic because of the disease, so he can choose for active euthanasia to end his life as well, which means he's not on a life support system, so he is still surviving but he does not want to live that life. So that in countries like Belgium even active euthanasia is allowed, पर हमारे देश में वो नहीं है, that you will be granted active euthanasia. So हमारे देश में तब है जब you are in a vegetative state for a long duration. तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पास तो पहले कोर्ट का खुद का गाइडलाइंस है और अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज किया है 2024 में हमारे यूनियन जो फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें, कि किस तरह से आप इस यूथनासिया को फॉलो कर सकते हैं अबाउट विथ होल्डिंग और विड्रॉवल ऑफ द केस। यानी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हॉस्पिटल्स को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, 2-3 लाइन इसमें लिख लेते हैं। In 2024, the Union Health Ministry released a set of draft guidelines, based on Supreme Court's directives. First, the treating physician needs to decide if the patient has any hope of recovery. ठीक, पहले तो वो डिसाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट, देन अ प्राइमरी बोर्ड has to assess the case, और इसमें इनको कंसेंसस से फैसला लेना है कि जो फिजिशियन ने कहा वो ठीक है या नहीं, एंड रीच अ कंसेंसस। और इसमें कौन कौन होंगे, एक जो फिजिशियन जो ट्रीट कर रहा है प्लस 2 एक्सपर्ट्स यानी सब्जेक्ट डॉक्टर जो उसी विषय के एक्सपर्ट होंगे, एंड रीच अ कंसेंसस, assess the case and reach a consensus। ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन होंगे। इस बोर्ड में 3 मेंबर होंगे, जो प्राइमरी बोर्ड मैंने यूज किया शब्द 3 मेंबर बोर्ड होगा, उसमें एक मेंबर होंगे जो ट्रीटिंग फिजिशियन प्लस 2 एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट यानी एरिया एक्सपर्ट्स, ट्रीटिंग फिजिशियन प्लस 2 subject experts with 5 or more years of experience. Third, then the doctors and the family has to decide that the measures यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम measures should be withdrawn. ठीक, नेक्स्ट, देन a request should be submitted to a secondary medical board और ये कौन होगा, ये सरकारी होगा पूरा हिसाब किताब। इसमें कौन होगा, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में इसमें लिखिए
डॉक्टर, वन डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय CMO, इन डिस्ट्रिक्ट में होता है ना चीफ मेडिकल ऑफिसर, हाँ, वन डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय CMO and plus 2 subject experts with 5 or more years of experience. ठीक है, फिर ये बोर्ड डिसीजन कितने देर में लेगा? विद इन 48 आवर्स एंड देन यू कैन विड्रॉ. ओके, द बोर्ड टेक्स डिसीजन विद इन 48 आवर्स. हालांकि एक और भी नियम होता है कि जब आप ये कर रहे हो तो जो मैजिस्ट्रेट है आप उसको इन्फॉर्म करके करते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी लॉ में ऐसा है कि यू शुड इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट. उसकी परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए दैट यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग दीज टास्क. तो ये भी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन है कि इस प्रोसेस से भी यूथनासिया को प्रैक्टिस किया जा सकता है. ठीक है, सो दैट्स मोर अबाउट द इशू ऑफ यूथनासिया और द गुड डेथ केस सिनारियो. Tomorrow we'll start with right to privacy.